A very good morning, ladies and gentlemen. I am Tanvi, and we at Kotak Securities welcome you to our today's session on currency options, opportunities, and advantages. This will be followed by a question and answer round by the end of the session. So, now, without any further delay, let me introduce you to our speaker of the day, Mr. Hitesh Sethia. He is a chief manager at NSE India Limited for commodities and currency derivatives. Along with Mr. Hitesh, we also have Mr. Vikas Bajaj, who is a senior VP for currency and derivatives at Kotak Securities. Please join me in welcoming them. Over to you, Vikas, sir. Thank you, Tanvi. A very warm welcome to everyone on a Saturday morning. Good morning, Hitesh. Next 45 minutes to 1 hour, we are going to have some interesting discussion. So, what we have done today, we have divided the presentation in two parts. First part will be taken by me, where I will talk about currency derivatives market, how it has grown over the last 12, 13 years, what are the opportunities there, and Hitesh will be talking more about currency options specific. But before I jump to my presentation, I just want to tell that why we chose this topic. So basically, there are two reasons for it. One is if we look at the size of derivatives market in India. When I say derivatives market, I basically mean equity derivatives. More than 95% of the volumes are happening in options, and it was a logical conclusion for us that currency options should ideally be the topic. And second is peak margin. I know that it has become 100% implemented from September 1st, and there are many traders who find it difficult with the margin with margin getting increased. So we thought of probably those who are not able to participate in equity derivatives, can currency be an alternative to them? So with that, I move on to my presentation. I hope my presentation is visible to all of you. So if you look at the growth of currency derivatives market in the last 13 years, so it was launched in August 2008. The volumes have increased 80x, and so in FY9, if average daily volume was 1100 crore, it is now, as we are talking, it is almost like touching 90,000. So I'm saying 80x, and I think that journey has just started in case of currency. Now, this is something interesting. So if you look at two, you are looking at two bars, one a green, a second is red. Now, if you see up to December, green bars used to be longer than the red bars. But if you see from Feb March onward, these red bars have started becoming longer and longer, and these red bars represent nothing but the options volume. And that is where I mean, it is becoming interesting to look at currency options in a slightly more in-depth way. So this should give you an idea that in currency also, the options volume are now the dominant part, and it has started increasing now. Just to give you an idea that uh, peak margin got implemented from December onward, and if we see that from Feb onwards, the options market share has started, or options volume have started overshooting the futures volume. Now this is purely the options share in overall currency market. So so if you see the options share, it is more than 50%. One sec. And if you look it from December 20 onwards, uh, uh, is my PPT visible to all of you? Sorry, I think PPT. One sec.
Is my PPT visible now? I think there is a problem. Just hold on. I think now the PPT is visible. Okay, sorry for this technical glitch. So I'll just start from the beginning. So if you look at the currency volume over the last 13 years, it has grown 80x, and I mean it looks like that journey has just started. I mean, if you see the red candle here. Now, if you look at this slide, we have two colors, one green and red. So green is basically representing your futures and red is the options volume. And if you see that from December onwards, the red bars have started becoming longer and longer. And basically that is where, we got little interested and we thought of why not we talk more about options here. And if you see the options here, I mean, in the overall currency market, so again, as I said, that December the peak margin got introduced, and at that point of time, options here was 46%, and from there onwards, it is slowly inching up. I mean, now it has almost reached to 57, 50, 56, 57%, and I believe that it is just the start, and the runway is long. So if in equity derivatives options here is more than 95%, I have no reason to believe otherwise, that why it cannot be north of 90% looking at the equity derivatives. So, I mean, just I will touch upon what has led to the growth of the currency market volumes and options in particular. So I call it 3L. So this is nothing but your lower contract size. I mean, if you look at currency derivatives, there are four major currency pairs which gets traded, and all of them are, except GBP INR, the contract size is of less than 1 lakh rupees. Lower margin, and this is something interesting, because here the margin requirement is just 2.5 to 3%, and which kind of gives you a leverage of almost 33x to 40x. And third is lower transaction cost, which basically I mean to say that in equity you have STT, and commodities you have CTT, but in currency derivatives you don't have anything like that. No STT, no CTT. So for a trader, the impact cost to that extent is lower. So this I call as a 3L: lower contract size, lower margin, and lower transaction cost. Now, in addition to these three, there are three more factors which are playing out for the growth of the currency derivatives market and options. Now, obviously, I mean, since we are right now today we are going to talk more about options. In currency also, we have weekly options and we have monthly options, and in case of dollar rupee, both these monthly and weekly options are fairly liquid. The only difference which I want to highlight here is, unlike in equity where weekly and monthly both contracts expire on Thursday, here there is a slight difference. Weekly options expires every Friday at 12:30 p.m. and monthly options expire 2 days prior to the last working day of the month. So just to explain, as we are in the month of September, लास्ट वर्किंग डे हमारा 30th सितंबर है, एंड आवर कॉन्ट्रैक्ट, मंथली कॉन्ट्रैक्ट जो will expire on 28th. Now if I just divide the volumes between weekly and monthly, weekly options on an average around 60% of the options volume happen in weekly and 40% in monthly options. Now, this is interesting because currency has a lower volatility, and that is where why I believe that a lot of retail clients can those who are interested to explore derivatives, and those possibly who think they are getting left out because of the peak margin. I mean, when I say left out, so today in case of Nifty or Bank Nifty, if you want to trade, the minimum margin requirement
is between 1 to 1.25 lakhs. And in case of currency, the margin requirement is much lower. That I will cover. But so those who are in the margin range of 50,000 to 1 lakh rupees, they can also do on currency, on currency side. So this is, I want to talk about, the daily volatility. So if you see the average daily volatility, it is around, average is 0.3%. Now 0.3% means on an average daily movement is, 20 to 25 paisa. It doesn't mean that there we don't have days where currency has moved, 50 paisa. But on an average, if you see the average daily volatility is 0.25 to 0.3%. And these red bars, if you see, these are of, the COVID time, March 20, when COVID hit, and at that point of time the volatility went up to 0.61. And this was again in April this year. We saw some volatility in dollar rupee. At that point of time it went up to 0.51. Otherwise, if I take the average for the last 15-16 months, it is just 0.25 to 0.3%. So instead of trading a product where, the average volatility may be 14-15%, here, the average volatility is not more than 3.5 to 4% on an annualized basis. Daily basis it is 0.25 to 0.30. This is, currency does have the hedge margin benefit as well. And so if you just look at it, the first one, the buy naked futures, if you can see, the margin written here is 1887. I say ki as a thumb rule, if you want to trade in dollar rupee, the margin requirement is 2000 rupees, because again, uh, this can vary depending upon how is the volatility. So what I have done here, I have shown here, that some of these common strategies which are being used by, the traders. What is the average margin or indicative margin required for someone to trade in dollar rupee one lot? So if you trade in futures, buy or sell, the margin requirement, average margin requirement would be between 1800 to 2000 rupees. Whereas if you do a straddle, it is somewhere around 2700, 26 to 2700. I mean, that has been indicated by the red arrow. And someone who does the iron fly kind of a strategy, the margin requirement reduces to 1700 rupees. So this is just to give you a brief idea about, that in currency margin benefits are also available. And even with 50,000 rupees, you can start trading in currency, and you can do at least, I mean, if I understand that average margin requirement is 2000 rupees for dollar rupee, with 50,000 rupees also you can do around 20 to 25 lots. So I mean, those who think that, peak margin is impacting them, I mean, they can look at currency as an alternative. And just to tell that, in currency, while a lot of people do talk the volatility is lower, but at the same time, if we see, the leverage is much higher. I mean, 33x to 40x as a natural leverage. And you just need 2 paisa movement, 2 paise ka movement, for uh, kind of getting 1% return on the margin. So what I've done, one lot is of $1,000, और उस पे अगर 2 पैसा का मूव होता है तो 20 rupees you make, and your average margin, if I understand, is 2000 rupees. You may end up making a 1% return with just 2 paisa move. And average we have seen in the previous slides is 20 to 25 paisa. So that's all from my side. Now I hand over to my friend Hitesh, who will now give and discuss more in depth about currency options. Okay. Thank you, Vikas ji, and thank you entire team of Kotak for giving me this chance. And on behalf of National Stock Exchange, I welcome all the viewers and namaskar to everyone. Uh, Thank you, Vikas ji, for setting up the momentum. And definitely, जो growth हमने recent past में derivative markets में देखी है,
वो शायद अभी तक और किसी बाजार में हमने नहीं देखी। और जब मैं डेरिवेटिव की मार्केट की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि मैं पूरे डेरिवेटिव मार्केट की बात कर रहा हूं। और मैं जब इसको कंपेयर करता हूं दूसरे मार्केट से तो देखता हूं कि डेरिवेटिव में जो ग्रोथ हुई है और पर्टिकुलरली इन पिछले 5 सालों में जो ग्रोथ हुई है ये बहुत अमेजिंग है, बहुत बहुत अच्छी है। और आई एम 100% होपफुल द जर्नी विल कंटिन्यू इन फ्यूचर एज वेल अबाउट द ग्रोथ। सो इसी चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं एंड लेट अस अंडरस्टैंड फ्यू इंपॉर्टेंट डायनामिक्स of one of the instrument which is part of derivative market, that is options. My disclaimer, the standard disclaimer is in front of you. Moving on to a good thing, and I'm really happy to share, it's a proud moment for Indian capital markets at NSE, that NSE becomes the world's largest derivatives exchange in terms of contracts traded for calendar year 2020. NSE becomes the world's largest derivatives exchange in terms of contracts traded for calendar year 2020. I'm sure that next year again and coming more years, right, we will have the same momentum for derivative markets. You know, this talks about the kind of depth, right? The kind of depth, the kind of liquidity, and the kind of interest which we have seen is being represented in terms of numbers of contracts traded. The question always comes up that why we need currency derivatives. So number one, futures contract introduced in 1972 at CME. Forex is an asset class. बहुत पुराना concept है derivatives trading. Currencies पे 1972 में आया था. दूसरा, Forex as an asset class है. आप इसको एक asset class की तरह समझ सकते हैं and you can include it in your portfolio. लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट इन द वर्ल्ड, बेसिकली मुझे बताने का जरूरत नहीं है कि एवरेज डेली टर्नओवर जो है दैट इज 5.5 ट्रिलियन. द रिकॉर्डेड टर्नओवर which happens every day in foreign exchange market is 5.5 trillion, and major trading centers so far are London, New York, Tokyo and Singapore. And I'm sure that our name will also be added soon in this list. The recent things which we have achieved in currency derivatives is in front of you. The currency derivative average daily volume. I will not read the complete slide, but I will just give you some brief about it. The currency futures daily average turnover has gone up by 8% in this financial year. Particularly, euro currency pair and GBP currency pairs, okay, saw a good growth in exchange traded derivatives. In fact, its turnover has increased, has grown by 2.5 times in this year. And the momentum still continues for all other products which are being available at this moment. That's a standard contract specification. Vikazi has already explained it. Important 7 currency pairs under futures: USD INR, Euro INR, GBP INR, and Japanese Yen INR. Contract in 3 non-INR currency pairs, which are Euro USD, GBP USD, and USD JPY. Contracts from 9 to 5 for Indian pairs and 9 to 7:30 are the timing, and few more details. But these details are always being available to you. Let me go towards our main focus of today, that is options. The options contract is in front of you. Again, 7 products on which the options contract has been built. Okay, right? Timing is being mentioned. 3 serial month contracts and 3 quarterly month contracts are being available. However, for currency pairs wherein we have weekly options contract, okay, we have 11 serial weekly contracts expiring on Friday, right? This has also been mentioned by Vikazi. The strike price interval is in front of you, that is quarter paisa. Margin on short positions are being applicable. Initial and ELM based margins are being applicable. Daily settlement happens for mark to market, and final settlement happens on E+2, that is expiry date +2. The final settlement happens on RBI reference rate, which is now these days being called as FBIL. Coming to the main core of options, the first thing always when we compare options with futures, the first thing which always comes in everyone's mind is out here. What if when you trade options and what when you compare the cost of trading options with futures,
क्या होगा जब आप ऑप्शंस ट्रेड करेंगे और ऑप्शंस को आप कंपेयर करते हैं कि अगर उसी समय पे आप फ्यूचर्स भी ट्रेड करते तो क्या हुआ होता। तो मैंने एक राउंड ट्रिप ट्रांजैक्शन लिया है और यहाँ पे मैंने इंडिकेटिव ब्रोकरेज रखी है। प्लीज मार्क माय वर्ड्स, आई हैव जस्ट पुट इन इंडिकेटिव ब्रोकरेज। सो पहला जो जो फर्स्ट पॉइंट मैं आपको मेंशन करना चाहता हूं दैट इज ऑप्शंस के बारे में कि उसकी कॉस्टिंग क्या है। तो इसमें मैंने लिया है कि मान लीजिए 75 का एक्सचेंज रेट चल रहा है यूएसडी आईएनआर का। मेरे को पता है 75 नहीं चल रहा है, अभी बहुत दिन हो गए 75 तो हमने देखा ही नहीं है, बट इस एग्जांपल में मैंने 75 लिया जस्ट टू मेक थिंग्स कन्वीनियंट फॉर एवरीवन हु इज लिसनिंग मी। 75 का एक्सचेंज रेट चल रहा है, मैं ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहा हूं। ओके, मैं ₹1 की प्रीमियम पे एक ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट खरीदता हूं और ₹1 पे ही बेच देता हूं। मतलब आई एम जस्ट पुटिंग एन एग्जांपल दैट वेयर इन आई एम मेकिंग अ राउंड ट्रिप ट्रांजैक्शन कर रहा हूं और मैं 100 कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड कर रहा हूं। देखिए बहुत छोटा कॉन्ट्रैक्ट होता है ये, जैसा अभी विकास जी ने भी आपको बताया दैट 70 आप देखेंगे लगभग 3% मार्जिन है, तो 75 रुपी यूएसडी आईएनआर का एक्सचेंज रेट चल रहा है। एक कॉन्ट्रैक्ट $1000 का है, मैंने मल्टीप्लायर 1000 लिखा हुआ है। 100 अगर मैं इसकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू निकालूं तो 75,000 का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होता है और उसका लगभग 3% 2250 रुपीज होता है। मतलब 2200-2300 रुपए में आपका एक पोजीशन खड़ा भी हो जाता है। सोचिए फ्यूचर्स अगर आपको समझने भी हो, राइट, सो दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म। आपको ऑप्शन समझने हो, फ्यूचर समझने हो, सो दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म from every single perspective, whether you want to be a buyer of an options contract, seller of an options contract, buyer of a futures contract or a seller of a futures contract. this क्यों? क्योंकि मार्जिन रिक्वायरमेंट बहुत ही कम है। ओके, तो बहुत छोटा सा 2200-2300 रुपए में तो आपको कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ओके, तो मैंने इसमें एग्जांपल लिया कि आपने 100 कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड किए होते। अगर आपने 100 कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड किए होते तो आपका स्टैम्प ड्यूटी मैंने मेंशन करा हुआ है, एक्सचेंज टर्नओवर फीस मैंने मेंशन किया हुआ है, जीएसटी ऑन एक्सचेंज टर्नओवर फीस मैंने मेंशन किया हुआ है, सेबी चार्जेस मैंने मेंशन किए हुए हैं, which accounts my total statutory expenses 82 rupees। स्टेट्यूटरी एक्सपेंस जो है वो 82 रुपीज है और उसके ऊपर मान लीजिए 100 कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करने का 200 रुपीज ब्रोकरेज लगता है। जस्ट एन एग्जांपल मैंने लिया है, उसके ऊपर जीएसटी मैंने कैलकुलेट किया है। सो माय टोटल expense of trading 100 contracts come to 318 rupees, 318-19 रुपीज, 318-19 रुपया के आसपास मेरे को पड़ता है। और यही चीज जब मैं फ्यूचर्स ट्रेड करता हूँ 100 कॉन्ट्रैक्ट्स, ओके, उसमें मैंने इंडिकेटिव ब्रोकरेज लिया हुआ है। अगर आप देखें तो 1944 रुपीज मेरा टोटल खर्चा पड़ता है। सो बताने की मैं ये कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को कि प्लीज याद रखिए ऑप्शंस बहुत इफेक्टिव होते हैं ट्रेड करने में। सोचिए मैंने अगर फ्यूचर्स टू ऑप्शंस भी अगर आपको कंपेयर करा है, राइट, और 318 और 1944, राइट, इज लाइक 5 टाइम्स डिफरेंस, 5 गुना डिफरेंस आपका फ्यूचर्स में है। मतलब जहां पर आपका कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन कम होता है, याद रखिए मेरे फ्रेंड्स, जहां पर आपका कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन कम होता है वहां आप बहुत तेजी से सौदा स्क्वायर ऑफ कर पाएंगे, एग्जिट कर पाएंगे, वापस रीइनिशिएट कर पाएंगे, वापस एग्जिट कर पाएंगे। और जहां पे कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन बड़ा होता है, मैं ऐसा नहीं बोलता हूं कि फ्यूचर्स अच्छा नहीं है, फ्यूचर्स बहुत अच्छा है, बट उसकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है जो हम समझेंगे तो ही आपको वो करना चाहिए, मैं आपको बताऊंगा। बट फ्यूचर्स में आपके थोड़े से ट्रांजैक्शन चार्जेस ज्यादा होते हैं। ओके, सो एक बार देखिए क्या इफेक्टिव है। सोचिए अगर आप हर दिन का, प्लीज अंडरस्टैंड, हर दिन का 100 लॉट्स भी आप ट्रेड करते हो फ्यूचर्स में और यू स्टार्ट योर शिफ्टिंग पोजीशन टू ऑप्शंस, हर दिन का 5 days a week, 252 days of trading approximately, right? सोचिए कितना मेजर चंक you will be able to save when you shift your position from futures to options, right? फ्यूचर्स अच्छे हैं बट आपको पता होना चाहिए कि इसको कहां पर यूज करना है। वी शुड अंडरस्टैंड that when to use futures and when to use options, and also when to use a combination of both of them, let's understand. So derivatives जो हैं उसकी दो मेजर कैटेगरीज है, लीनियर डेरिवेटिव्स और नॉन लीनियर डेरिवेटिव्स। लीनियर मतलब सीधा सीधा डेरिवेटिव, आप जिसको फ्यूचर्स बोलते हैं, हम जिसको फ्यूचर्स बोलते हैं। क्या किया जाता है उसमें, अगर आपको एक पॉइंट पे अच्छा लग रहा है कि यहाँ से आपको यूएसडी आईएनआर या यूरो आईएनआर, जीबीपी आईएनआर, जापानीज येन आईएनआर कॉन्ट्रैक्ट बुलिश लग रहा है, सो आप फ्यूचर्स बाय कर लीजिए। अगर प्राइस ऊपर जाएगा, राइट, आपके बाय करने के बाद में बुलिश हो जाता है, सो डेफिनेटली यू विल बी हैप्पी। अगर प्राइस नीचे आ रहा है देन यू हैव टू फॉलो स्टॉप लॉस। आई होप मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ आप समझ गए होंगे। ओके, लीनियर है, लीनियर का मतलब होता है बिल्कुल सीधा चलता है,
ऊपर जाएगा अगर आप बायर हैं तो प्रॉफिट है, नीचे जाएगा तो लॉस है। अगर आप सेलर हैं और ऊपर जाएगा तो लॉस है, नीचे जाएगा तो आपको प्रॉफिट आएगा। नॉन लीनियर डेरिवेटिव अलग होते हैं, नॉन लीनियर डेरिवेटिव अलग होते हैं। लीनियर मतलब बिल्कुल सीधा चलने वाला, नॉन लीनियर जो बिल्कुल सीधा नहीं है। इसको मैं और सिंपल वर्ड्स में नहीं बता पाऊंगा। सो नॉन लीनियर आर विच आर नॉट लीनियर इन नेचर। ओके, सो कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, दो ऑप्शन आपको उसमें दिए। देखिए नाम भी बहुत अच्छा है, द नेम ऑल्सो इज वेरी वेरी गॉर्जियस, ऑप्शंस। सो लाइफ हैज टू बी फुल ऑफ ऑप्शंस ऑलवेज, life should have to be full of options, right? We need options everywhere in our life, right? Okay, so call option, put option, दो options आपके पास में। now what is call option? मैं मुझे पता है, मैं जिन लोगों से बात कर रहा हूँ वो बहुत अच्छे से समझते हैं, but it is my duty to give you a one liner to it, which is right to buy. right to buy underlying at strike price is call option. आपके पास अधिकार है खरीदने का, आप अंडरलाइन खरीद सकते हैं एट एक स्ट्राइक प्राइस, ये कॉल ऑप्शन होता है। और अंडरलाइन बेचने का अधिकार, राइट टू सेल, इज पुट ऑप्शन। सो बेचने का अधिकार आपके पास जब आप रखना चाहते हैं तो उसको पुट ऑप्शन बोला जाता है। डू यू नो अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट ऑप्शन? इट इज बीइंग लिस्टेड आउट हियर। ऑप्शंस अगर आप बात करते हैं और जब आप ऑप्शंस बाय करके चलते हैं तो ये बहुत कम रिस्की है, एक्सपेंसिव बहुत कम है, ये बहुत लीवरेज आपको प्रोवाइड करते हैं। आप सोचिए छोटे से अमाउंट में, छोटे से, मान लीजिए कोई चीज की प्रीमियम 1 रुपए है, मतलब 1,000 रुपए में आपकी एक पोजीशन ओपन हो जाती है। 1 रुपए में बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, मुझे भी पता है, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल कि अगर एक चीज की प्रीमियम 1 रुपए है और आप ऑप्शन बाय करते हैं, 1000 का ऑप्शन मल्टीप्लायर है, तो 1,000 रुपए में आपकी एक ऑप्शन की पोजीशन ओपन हो जाती है। सोचिए कितना लीवरेज कॉन्ट्रैक्ट है। ऑप्शंस बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, और अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आपको मार्क टू मार्केट के बारे में टेंशन लेने का जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगा। आपके पास वैरायटी ऑफ स्ट्राइक प्राइसेस है, और यकीन रखिए अगर आप ऑप्शन सही तरीके से समझते हैं तो आप अपनी पोजीशन के लिए एक फ्लोर और सीलिंग प्राइस भी बना सकते हैं। फ्लोर और सीलिंग प्राइस भी बना सकते हैं। हम लोग आज समझेंगे कैसे एक फ्लोर और सीलिंग प्राइस क्रिएट किया जाता है ऑप्शन के साथ में। तो ऑप्शन इज फुल ऑफ ऑप्शन। जो हमको फ्यूचर्स में प्रॉब्लम होती थी, मार्क टू मार्केट की व्यवस्था करके रखनी पड़ती थी, मार्जिन की व्यवस्था करके रखनी पड़ती थी, वो सब बहुत कम हो गई। आप ऑप्शन बायर बन सकते हैं। ओके, बहुत फ्लेक्सिबल है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव, ये बहुत कम एक्सपेंसिव होते हैं। एक चीज जो मैं सभी प्रेजेंटेशंस में बताता हूं कि जो सबसे बड़ा डिफरेंस फ्यूचर्स और ऑप्शंस में है, जो सबसे बड़ा डिफरेंस फ्यूचर्स और ऑप्शंस में है, वो है कि आप फ्यूचर को सिर्फ और सिर्फ तब यूज कर सकते हो व्हेन यू आर डायरेक्शनल। नाउ आई रिपीट दिस, you can use futures only when you are directionally biased. आपको लग रहा है कि ऊपर जाएगा, let's say you are expecting जापानीज एंड आईएनआर का जो एक्सचेंज रेट है वो ऊपर जाएगा, सो आप क्या करते हैं, आप फ्यूचर उसका बाय कर लेते हैं। अगर आपको लग रहा है जीबीपी आईएनआर का एक्सचेंज रेट नीचे जाएगा, व्हाट आर यू डूइंग, यू बेसिकली जस्ट गोइंग एंड क्रिएटिंग अ शॉर्ट पोजीशन इन इट, इन फ्यूचर्स, राइट? दैट्स द लिमिटेशन ऑफ फ्यूचर। सिर्फ या तो बुलिश हो सकते हैं या बेरिश हो सकते हैं, बट ऑप्शन एज द नेम सजेस्ट, राइट? ऑप्शन में बहुत सारी चीजें हैं, इट इज फुल ऑफ ऑप्शन। यू कैन इवन ट्रेड ऑप्शंस, you can even trade options when you don't have any directional view. आपको लग रहा है, let's say let me give you an example, आपको लग रहा है यार नहीं बस 73 74 के बीच में एक्सचेंज रेट यूएसडी एनआर का रहने वाला है। सपोज कोटक सिक्योरिटीज की रिसर्च से आपको सजेस्ट किया जाता है कि आज कल परसों 3-4 दिन आगे कोई ज्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं रहने वाला है, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग, ओके, ऐसा सजेस्ट किया जाता है कोटक सिक्योरिटीज की रिसर्च से कि डायरेक्शनल नहीं है यूएसडी आईएनआर, डायरेक्शनल नहीं है, या कोई भी करेंसी पेयर डायरेक्शनल नहीं है। अगर ये बताया जाता है तो यू ट्रस्ट मी, ऑप्शंस इतनी अच्छी चीज है दैट यू कैन टेक एन एडवांटेज ऑफ दिस इंफॉर्मेशन बाय ट्रांसलेटिंग इट इन ऑप्शन स्ट्रेटेजी। आप इसको ट्रांसलेट कर दीजिए ऑप्शन स्ट्रेटेजी में, आप ऑप्शन राइटर बन जाइए। अगर आपको लग रहा है कि इस लेवल, आपको पता है इस लेवल के ऊपर नहीं जाने वाला है और इस लेवल के नीचे नहीं जाने वाला है, तो भी आप ऑप्शंस को यूज करके यू कैन स्टार्ट accumulating profits. So difference क्या हुआ, फ्यूचर्स में या तो बुलिश या बेरिश, बट यहां पर ऑप्शंस में आपको बताता हूं कितना इफेक्टिव है। अगर आप एक्सट्रीमली बुलिश हैं तो भी आप ऑप्शन यूज कर सकते हैं, अगर आप स्लाइटली बुलिश हैं तो भी आप ऑप्शन यूज कर सकते हैं, अगर आप न्यूट्रल हैं, कंसोलिडेशन आपका व्यू है तो भी आप ऑप्शंस यूज कर सकते हैं, अगर आपका व्यू स्लाइटली बेरिश है तो भी आप ऑप्शंस यूज कर सकते हैं, और अगर आपका व्यू बेरिश है, स्ट्रांगली बेरिश है, तो भी आप ऑप्शंस यूज कर सकते हैं, राइट? दैट्स द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑप्शंस, दैट्स द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑप्शंस पर से।
ओके, सो बहुत बहुत एडवांटेजियस चीज है। मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि ऑप्शंस अच्छे से समझिए और इसमें काम करिए। अब आ जाते हैं एक छोटी सी पर्सपेक्टिव से कि ऑप्शन पोजीशनिंग जो होती है, ऑप्शन पोजीशनिंग ये कैसे लोग करते हैं, कब करते हैं, कैसे करते हैं। तो ये एक जस्ट सैंपल स्लाइड मैंने दिया है कि ऑप्शन पोजीशनिंग आप कैसे कैसे कब कब कर सकते हैं। सो ऑप्शन पोजीशनिंग देखिए, आप अलग अलग चीजों को मिक्स करके कर सकते हैं। ऐसे तो लिस्ट बहुत लंबा है, आई कैन समराइज इट इन 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 वन स्लाइड, सॉरी, बट कुछ पार्ट्स में इसके आपको बताता जाऊंगा। सो आप सिर्फ एक कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं, आप सिर्फ एक पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं। एक एक चीज मैं आपको बताता जाता हूं। आप सिर्फ एक कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। कब बाय आप करेंगे आप कॉल ऑप्शन? व्हेन यू आर एक्सट्रीमली बुलिश एंड इमीडिएटली बुलिश। याद रखिएगा, यू शुड बाय अ कॉल ऑप्शन। कब आपको कॉल ऑप्शन खरीदना चाहिए? नाउ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव ऑफ माय प्रेजेंटेशन कि सब किसी, मैं जब लोगों से मिलता हूं, बात करता हूं, तो सबको पता है कि तेजी जब है तो कॉल ऑप्शन खरीदना है, बट ऐसा नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। दिस इज नॉट यू नो something which is not appropriately communicated. You should only buy a call option when you are extremely bullish and immediately bullish. अगर मैं आपको बोलूं अरे 3 महीने बाद बुलिश होगा, नो पॉइंट इन। अगर मैं आपको बोलता हूं यस आगे के आने वाले 1-2-3 दिन में बुलिश होगा, देन इट इज मोर अप्रोप्रिएट टू बाय कॉल ऑप्शन। सेम वे व्हेन टू बाय अ पुट ऑप्शन, राइट? पुट ऑप्शन कब आपको बाय करना है समझिएगा, व्हेन यू आर एक्सट्रीमली बेरिश, right? When you are extremely bearish or immediately bearish, sorry, when you are extremely bearish and immediately bearish, right? तब आपको पुट ऑप्शन बाय करना है। मत करिएगा अगर कोई बोलता है नहीं धीरे धीरे प्राइस ऊपर जाने वाला है तो कॉल ऑप्शन खरीदिए, मत खरीदिए। नॉट अ करेक्ट अप्रोच मोस्ट ऑफ द टाइम, राइट? इट इज नॉट गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू। वैसे अगर कोई बोलता है यार प्राइस नीचे जाने वाला है बट धीरे धीरे नीचे जाने वाला है, ट्रस्ट मी, राइट? बाइंग अ पुट ऑप्शन इज नॉट गुड per se for your portfolio. ओके, आगे बढ़ते हैं। सेलिंग अ कॉल ऑप्शन, आई एम सो सॉरी इट गॉट जस्ट रिपीटेड। सेलिंग अ कॉल ऑप्शन, सेलिंग अ पुट ऑप्शन, काइंड ऑफ। सो सेल अ कॉल ऑप्शन, राइट? सो द सिंपलेस्ट वर्ड टू डिफाइन, व्हेन आई एम not extremely bullish and not extremely bearish, when neither I am extremely bullish nor I am extremely bearish, आप कोई भी कॉम्बिनेशन यूज करिए। when I'm not bullish I should sell a call option, वैसे ही when I'm not bearish I should sell a put option, राइट? अब इन दोनों को कंबाइन भी मैं कर सकता हूं, किनको? दो इंस्ट्रूमेंट्स को, फ्यूचर्स विद ऑप्शन, हम लोग समझेंगे, राइट? फ्यूचर्स के साथ में ऑप्शंस, राइट? अच्छा, इसको हम लोग बोलते हैं रिस्क कंट्रोल स्ट्रेटेजी। मैं फ्यूचर्स लेता हूं, कॉल ऑप्शन बेच देता हूं, मैं फ्यूचर लेता हूं, मैं पुट ऑप्शन खरीद लेता हूं। सो इस तरीके से भी लोग कॉम्बिनेशन बनाते हैं, राइट? इसके अलावा अगर मुझे लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेट्स से बजट सेशन आने वाला है, और लेट्स से आई एम एक्सपेक्टिंग इंटरेस्ट रेट टू चेंज, राइट? और कोई मेजर इकोनॉमिक इवेंट आने वाला है, बट आई डोंट नो व्हाट विल बी द impact in terms of that USD INR or any other currency pair which I'm trading will become bullish or bearish. अगर मुझको वो नहीं पता है, ओके, तो मैं दोनों को बाय भी कर सकता हूं। I can buy a call option, I can buy a put option. Usually it is being done before events, and याद रखिएगा बिफोर मेजर इवेंट्स। मैं दोनों को बेच भी सकता हूं, राइट? सो अगर मुझे लग रहा है दैट मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू बी इन अ रेंज, यूएसडी आईएनआर, यूरो आईएनआर, कोई भी करेंसी पेयर एक रेंज में रहने वाली है, राइट? ओके, तो मैं दोनों को बेच भी सकता हूं, ओके? मैं एक को बाय और दूसरे को सेल भी कर सकता हूं। मैं कॉल को बाय कर सकता हूं और पुट को सेल्स कर सकता हूं सेम स्ट्राइक प्राइस पे, जिसको हम सिंथेटिक बोलते हैं। और मैं उल्टा भी कर सकता हूं, मैं सेल भी कर सकता हूं एक को और दूसरे को बाय भी कर सकता हूं। मैं कॉल सेल किया और पुट बाय कर लिया, राइट? ओके, इसको सिंथेटिक शॉर्ट फ्यूचर्स बोला जाता है, ओके, राइट? सो मैं इसको बहुत सारे तरीके से यूज कर सकता हूं। मैं रेशोज भी कर सकता हूं जो बहुत इफेक्टिव होते हैं, राइट? रेशोज कर सकता हूं, मतलब मैंने एक कॉल ऑप्शन खरीदा और 2 कॉल ऑप्शन बेच दिए, या फिर मैंने एक पुट ऑप्शन खरीदा और 2 पुट ऑप्शन बेच दिए, या इसका उल्टा भी कर सकता हूं, ओके? ओके, मैं बटरफ्लाइज भी बना सकता हूं, राइट? आई कैन मेक बटरफ्लाइज एज वेल, बाय सेल एंड बाय, थ्री स्ट्राइक प्राइस विल बी यूज। सो अलग अलग चीजें मैं यूज कर सकता हूं, और 4 लेग की पोजीशंस भी मैंने मेंशन की। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, सिर्फ मुझे क्या चाहिए, लेट मी टेल यू, आई जस्ट नीड
a perspective that what is expected to happen in future. मैं इनमें से बहुत सारी चीजों की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है, कब किसको कहाँ यूज करना है, probably some other day we will look into, right? आज जो हमारा टॉपिक है ऑप्शन स्ट्रेटजीज में, उस पर ही ज्यादा फोकस करूंगा, क्योंकि एवरीथिंग कांट बी कवर्ड इन अ स्मॉल सेशन पर से ऑफ एन आवर्स टाइम. सो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि इतनी सारी आप जो सोच सकते हैं ना, वो हम लोग ऑप्शंस में बना लेते हैं. और मेरा यही क्वेश्चन आपसे रहेगा कि आप भी अपना नॉलेज इंक्रीज करिए, आप भी अपना ऑप्शंस की तरफ झुकाव बढ़ाइए. ट्रस्ट मी, आप जैसा सोचते हैं आप वैसा कर सकते हैं. अभी मैं आपको एक एग्जांपल कोट करता हूं. कल मैं किसी से बात कर रहा था, किसी से मैं बात कर रहा था, मैंने पूछा उनसे आपका व्यू क्या है यूएसडी आईएनआर को लेकर. समवन सजेस्टेड मी दैट माय व्यू इज 73. अभी प्राइस चल रहा है और 73 मुझे लगता है कि प्राइस यहीं पे रहने वाला है, ज्यादा मूवमेंट नहीं है, 1 रुपए प्लस माइनस. नाउ द मिनट ही सेड, राइट, ही सेड आई गॉट अ व्यू कि यार आई कैन डू अ बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी. प्राइस यहीं रहने वाला है या ज्यादा से ज्यादा 1 रुपए नीचे या 1 रुपए ऊपर, मतलब ओवरऑल रेंज ही टोल्ड मी. आई कैन यूज अ बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी, आई कैन यूज एन आयरन कॉन्डोर स्टडी. मतलब मैं बहुत सारे तरीके से ऑप्शंस को यूज कर सकता हूँ. डू यू नो, अगर उसने मुझे ऐसा बोला नहीं यार मुझे लग रहा है कि है ना कुछ बड़ा होने वाला है, so I would have used option from a different perspective. So option is full of option. आप जैसा सोच सकते हैं, राइट? या आपको जैसा सजेशन दिया जाता है आपको कोटक के रिसर्च से, आपको जैसा सजेशन दिया जा रहा है आप वैसा का वैसा ऑप्शंस में ट्रांसलेट कर सकते हैं. और एडवांटेजेस क्यों है? देखिए, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं ऑप्शंस को कि आपका फ्लोर और सीलिंग भी हो जाए. फ्लोर और सीलिंग मतलब आपका मैक्सिमम लॉस मैक्सिमम प्रॉफिट भी आप क्रिएट कर सकते हैं आउट ऑफ ऑप्शंस पोजीशन. आइए समझते हैं इसको. मगर उसको समझने के लिए मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल बनाया है दैट व्हेन यू शुड बाय अ कॉल ऑप्शन, व्हेन यू शुड बाय अ कॉल ऑप्शन. ओके, सो मान लीजिए प्राइस ऊपर गया है, प्राइस इज आउट हियर एट दिस पॉइंट इन टाइम. यहां पर मैंने जो मार्क किया है, अब 5 चीजें हो सकती है, राइट? प्राइस कैन स्ट्रेट अवे गो अप, can go little up in case 2 side. Case 3 is out here. When price goes into consolidation, the exchange rate goes into consolidation. Price नीचे जा रहा है, right? Okay, थोड़ा नीचे जा रहा है, that is case 4, and case 5 is price goes straight away down. Now suppose if I buy a call option, अगर मैं call option buy कर लेता हूँ, अभी आज मैंने buy कर लिया है. Now number one, the minute I buy a call option and the exchange rate becomes bearish, exchange rate bearish हो जाता है, right? I will have a loss out here. अगर केस 4 होता है, again I will have a loss out here. केस 3 होता है, again I'm going to have a loss out here, right? अगर प्राइस धीरे धीरे ऊपर जाने लगता है, I may be a winner. I am very specifically using a word, I may be a winner. I bought a call option, जो exchange rate है बहुत धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, right? I may be a winner. I'm not sure whether I will be a winner or not, but I may be a winner. So the chances are 50-50 kind of, right? बट अगर मैंने कॉल ऑप्शन बाय किया है और एक्सचेंज रेट स्ट्रेट अवे ऊपर जा रहा है, एक्सचेंज रेट स्ट्रेट अवे ऊपर जा रहा है, देन आई विल बी अ विनर इन दिस ट्रेड. आई विल बी द विनर इन दिस ट्रेड. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, right, I'm trying to say is that I will be a winner out here in case 1. If I buy a call option, I may be a winner. I still give a probability of doubt out here. यहाँ भी मैं winning कर सकता हूँ, right? But on 3 other places I will be a loser. So समझाने वाली बात यह है, you should buy a call option, right, when you are expecting an immediate upward movement. If you are expecting anything else, avoid using the buy side of call option. Same way, जैसे अभी पिछले हफ्ते हुआ था, यूएसडी आईएनआर एक्सचेंज रेट जो है वो बहुत तेजी से नीचे आ गया था, राइट? इन सच केसेस, अगर आपको लग रहा है बहुत तेजी से नीचे आ जाएगा, दैट इज केस 5. in such times the better option is to buy a put option, right? The better thing is you should buy a put option. Okay, so आपको ये पता होना चाहिए मुझे कब क्या करना है. So the biggest question which is being asked to me, मुझे कब ऑप्शन खरीद के चलना है और मुझे कब ऑप्शंस बेच के चलना है, राइट? मुझे कब ऑप्शन बायर बनना है और मुझे कब ऑप्शन सेलर बनना है. सो आई एम वेरी वेरी श्योर कि आपको इस स्लाइड से एक अंदाजा लग गया होगा कि बाय कब करना चाहिए कॉल ऑप्शन को, जब व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग केस 1 टू हैपन, right? Or case 5, when you are expecting to happen, then you should buy a put option. In all other cases, my request is to be an option writer. और बहुत rigid मत होइए. I have seen people who are option writers. They're writing options and probably
couple of months in the year, they lose everything. So don't get rigid. Check market conditions, check technicals, check fundamentals, check economic news which are expected to happen, and then decide whether you should be a buyer of an options contract or whether you should be a seller of an options contract. Okay, so डायरेक्शनल व्यू लेना बहुत जरूरी होता है. आइए इस ऑप्शन बाइंग की सही सही तरफ हम थोड़ा समझ लेते हैं. ओके, आइए हम लोग सही तरफ. So when I read a lot of books, it says limited loss when you are an option buyer, right? No, it is not correct. So if I buy an options contract by paying 1 rupees in premium, my total capital being deployed is 1000 per lot, right? If I lose entire 1000 rupees, then probably I have lost 100% of my capital which is being deployed on the specific instrument type. So याद रखिए, लिमिटेड लॉस नहीं है ऑप्शन बायर को, लिमिटेड लॉस नहीं होता है ऑप्शन बायर को. इट्स अ 100% लॉस ऑन कैपिटल बीइंग डिप्लॉयड. ओके, राइट. उस इंस्ट्रूमेंट पे अगर आपको पूरा लॉस होता है तो इट्स एन 100% लॉस. वैसे ही देयर इज नथिंग लाइक अनलिमिटेड प्रॉफिट. द राइट वर्ड टू यूज इज सब्सटेंशियल प्रॉफिट्स. सब्सटेंशियल प्रॉफिट्स याद रखिए. अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो ऐसा मत सोचिए आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट्स हो सकते हैं, नहीं. एवरीथिंग इज अकाउंटेबल. You will have substantial profit if market rewards you. If you have bought a call option and an immediate upward movement happens, you will have substantial profits. Premium payments किए जाते हैं ऑप्शंस में, बहुत अच्छे होते हैं. Buy option when you are directionally sure along with higher momentum in prices. आपको सिर्फ तब बाय करना है ऑप्शन जब आपको लगता है कि आप डायरेक्शनली करेक्ट हैं. ओके, और प्राइस का मोमेंटम भी बहुत अच्छा रहने वाला है. और इसके अलावा एक मिस्टेक हम लोग जो हमेशा कर देते हैं, दैट यू शुड ऑलवेज चेक वॉलेटिलिटी. यू शुड ऑलवेज चेक वॉलेटिलिटी, राइट, व्हेन यू आर ट्रेडिंग ऑप्शन. सो ऑप्शंस की जो प्रीमियम होती है वो दो वजह से चेंज होती है माय डियर फ्रेंड्स. दो चीज ऑप्शन की प्रीमियम चेंज करती है, राइट, ऑन द सेम डे. मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ एक दिन पास ओवर हो गया देन यू विल टॉक अबाउट टाइम डीके, नहीं. सेम डे अगर ऑप्शन की प्रीमियम चेंज हो रही है तो दो वजहों से वो चीज चेंज होती है. एक, डायरेक्शनल क्या मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, राइट, उसके कारण चेंज हो रहा है, मतलब चेंज इन अंडरलाइन प्राइस जिसको हम बुक्स के हिसाब से बात करें. और सेकंड इज चेंज इन वॉलेटिलिटी. चेंज इन वॉलेटिलिटी, ऑप्शंस की वॉलेटिलिटी को इंप्लाइड वॉलेटिलिटी बोला जाता है. ओके, राइट. आइए दो बहुत सिंपल स्ट्रेटजीज मैं आपको बताता हूं और आपको ये भी मैं बताता हूं कि कब इनको आपको यूज करना है, कब इनको आपको यूज करना है. ओके, राइट. आइए पहले इसका सीधा वाला तरफ समझेंगे और फिर इसका उल्टा वाला तरफ हम समझेंगे. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, इसका पहले एक नॉर्मल सिनेरियो समझते हैं और फिर इसके बाद में हम लोग इसका दूसरा सिनेरियो जो मैंने स्लाइड पे डाला है वो हम समझेंगे. आइए, सो इसमें मैं एक एग्जांपल क्रिएट कर रहा हूं आप लोगों के लिए, राइट. आई नो दीज आर नॉट द प्राइसेस बट दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. ओके, so suppose the UP stands for underlying price. The underlying price is currently 75. Just an example, I know it is not 75, but समझिएगा. Okay, right. मेरा व्यू क्या है? My view is bullish. My view is bullish. मेरा व्यू bullish है, but कैसा bullish है मैं आपको बताऊं. It is bullish to, sorry, up to 77. मुझे लग रहा है 75 का एक्सचेंज रेट चल रहा है और इस महीने अगले 30 दिनों में 77 तक जा सकता है, इसके ऊपर नहीं जाएगा. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, बहुत बार आपको रिसर्च से व्यू आता होगा कि 75 से बुलिश है बट इट कैन गो अप टू 76 और 77 व्हाटएवर. सो मैंने एग्जांपल में लिया है एट दिस मोमेंट द अंडरलाइंग प्राइस इज एट 75 एंड आई एम बुलिश based on my analysis or Kotak's analysis, whatever you call it as. I am bullish up to 77. I'm bullish up to 77. Okay, right? So मैं बुलिश हूं 75 से 77 तक, राइट. ये हमारा स्टेटमेंट है. अब इसको मैं ऑप्शन स्ट्रेटेजी में ट्रांसलेट करता हूं. ओके, और ये ऑप्शन स्ट्रेटेजी को कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सो बिकॉज आई एम बुलिश फॉर फ्रॉम 75, आई शुड बाय अ कॉल at 75. ओके, 75 में कॉल आप बाय कर लीजिए. प्लीज 1 सेकेंड, लेट मी चेंज द शीट. सीम्स लाइक बहुत छोटा छोटा आपको दिखेगा नहीं तो. बाय कॉल ऑप्शन
Okay, at 75. Now suppose the premium for 75 ka call, okay, the premium is 2 rupees. I do understand ऐसा नहीं होता है, right, but simple समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, right, okay, or because I'm bullish up to 77, I'm bullish up to 77, that means I'm not bullish beyond 77, so I should sell a call option. I should sell a call option of 75. I'm so sorry, 77. Okay, now suppose the premium is 50 paisa. Suppose the premium is 50 paisa. Okay, so I bought a call at 2 rupees, right? Let me change for simple numbers. Let me change to 1. Okay, right? So 77. Okay, now my view is very clear. I'm bullish from this point onwards and I'm bullish up to 77. And that's how I bought a call option of at the money and sold a call option of out of money. In books, this strategy is being called as bull call spread, right? And विवेक विकास जी अभी आपको सजेस्ट भी किए थे थोड़ी देर पहले कि आप जब स्प्रेड या हेज पोजीशंस लेते हैं तो आपको मार्जिन्स कम लगते हैं, तो बहुत कम मार्जिन इस पे अप्लाई होते हैं. ओके, आइए इसको समझ लेते हैं. Now, what is your premium paid? The amount of premium, net premium paid. आपका net premium paid कितना था? आपने 2 रुपए में एक ऑप्शन बाय किया है. You have bought it, right? And you have sold this. Okay, right? So net premium paid is 2 minus 1. Okay, 2 minus 1. अब ये 1 रुपीज आपको याद रखना है. आपको ये 1 रुपी आपको याद रखना है. Okay, right? Now, अगर आप ये करेंगे तो योर फर्स्ट क्वेश्चन विल बी, और अगर आप अपने क्लाइंट को सजेस्ट करते हैं, राइट, अगर आप ये अपने क्लाइंट को सजेस्ट करते हैं तो उसका पहला क्वेश्चन रहेगा कि यार अगर ये मैं करूंगा तो व्हाट विल बी माय मैक्सिमम लॉस, मैक्स लॉस इसको हम बोलते हैं, राइट. सो योर मैक्स लॉस विल बी इक्वल टू नेट प्रीमियम पेड. इस स्ट्रेटेजी में अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में भी चला जाता है, आपका व्यू सही नहीं होता है, यू आर बुलिश फ्रॉम 75 अप टू 77, अगर ये पूरा बेरिश हो जाता है, कितना भी बेरिश हो जाता है मार्केट, योर मैक्सिमम लॉस विल बी 1 रुपी ओनली. योर मैक्सिमम लॉस विल बी थ्रू आउट द मंथ. यू कैन होल्ड दिस पोजीशन, कितना ही नीचे चले जाए एक्सचेंज रेट, बट आपका लॉस 1 रुपी से ज्यादा हो ही नहीं सकता. मैक्स प्रॉफिट आपको बताता हूं. योर मैक्स प्रॉफिट, राइट, योर मैक्स प्रॉफिट इज द डिफरेंस इन स्ट्राइक प्राइस. मैं रिपीट करता हूं, डिफरेंस इन स्ट्राइक प्राइस minus net premium paid. Okay, minus net premium paid. डिफरेंस इन स्ट्राइक प्राइस 2 रुपए था, उसमें से नेट प्रीमियम अगर आप निकाल दोगे तो 1 रुपए का प्रॉफिट होगा. मतलब अगर आपका व्यू सही रहता है, अगर आपका व्यू सही रहता है, ओके, राइट, तो आपको प्रॉफिट 1 रुपए का होगा, राइट. ओके, और इसको हम लोग बहुत फैंटास्टिकली समझेंगे अभी. ब्रेक इवन पॉइंट क्या है इसका? ब्रेक इवन पॉइंट मतलब किस पॉइंट से आपको प्रॉफिट्स आएंगे ऑन एक्सपायरेशन डेट, राइट. तो बहुत सिंपल है वो भी. लेट मी टेल यू, टेक अ लोअर स्ट्राइक प्राइस प्लस 1 रुपी, दैट्स द योर ब्रेक इवन पॉइंट. सो अगर आज 75 का रेट है, अगर एक्सपायरी डेट पे 76 से ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट आएंगे, बट आपका मैक्सिमम प्रॉफिट 1 रुपए का ही हो सकता है. अब आप बोलेंगे व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डूइंग दिस स्ट्रेटजी व्हेन आई एम जस्ट मेकिंग 1 रुपी एंड आई एम गोइंग टू लूज 1 रुपी. इट्स अ 50-50 win to loss condition. Okay, so not effective to execute this, but please understand this is just an example. Now let me come to the main point out here, the main finer point in this strategy, right. I'll give you 2 examples, okay, and explain you when you should do this, right. Let me change the numbers. Suppose the premium is 1.5 instead of 1. If it is 1.5, the premium for the call option which I'm selling is 1.5. See, the effectiveness increases. The effectiveness increases that my net maximum loss in this strategy is now going to be 0.5. देखिए, मैंने सिर्फ प्रीमियम 1 रुपए से 1 रुपए 50 पैसे कर दिया, तो कितना अच्छा एक चीज हुआ क्या उसमें? हुआ ये कि मेरा जो अब मैक्सिमम लॉस है, राइट, वो 50 पैसा हो सकता है. मैक्सिमम प्रॉफिट 1.5 रुपया हो सकता है. 50 पैसा, 1.5 रुपया. योर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज फेवरेबल नाउ,
right? And your break even point has also come closer, which is 75.5. मतलब अभी 75 का exchange rate है, 75.5 से ही आपको प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा. क्या किया? अगर 2 और 1 है तो मैंने आपको पहले बताया कि मैक्स प्रॉफिट 1 रुपए रह सकता है, मैक्स लॉस 1 रुपए रह सकता है. बट जहां मैं इफेक्टिवनेस ऑफ स्ट्रेटेजी, सी आपको एक चीज समझ में आना चाहिए कि आपको ये स्ट्रेटेजी कब करना है. तो मेरे हिसाब से आपको ये स्ट्रेटेजी तब करना है जब इन दोनों का डिफरेंस कम हो. इन दोनों का डिफरेंस मतलब जो सिलेक्टेड सेल है, 2 और 1.5 रुपए का डिफरेंस कम हो, जितना कम हो. सपोज इफ दिस इज 1.7, check, my strategy has become effective. Why? My maximum loss in this strategy is 0.3. So two things you need to understand in this strategy. Number one, आपको एक व्यू होना चाहिए. व्यू हैज टू बी बुलिश. Number one. Number two is do this when the difference in two premiums is very thin. The difference between two premiums. If the difference is pretty high, okay, let's say if it is 0.5, right? Don't do this. Why? Your maximum loss will be 1.5 and your maximum profit will be 0.5. Okay, right? So this is how you should execute a bull call spread. So two things. Number one, you should have a view, right? The view, let's say, is coming from Kotak Securities research side that you can be bearish from this point up to this point. That can be your view. A bullish view is required. Plus, the difference in premium has to be thin. Lesser the difference in premium, more effective your strategy will be. More effective your strategy will be. Okay. Now, suppose 1.5, राइट, अगर रहता है, ये मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाता है. अब इसी चीज को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं. आई विल चेंज दिस पर्टिकुलर पार्ट, राइट, और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना देता हूं, बट आपको उसका इफेक्टिवनेस बताता हूं. इस स्ट्रेटेजी में जो एक पॉइंट है जो मैं आपको यहां मेंशन करता हूं, टू 1.5, माय ब्रेक इवन इज 75.5. 75.5 इज माय ब्रेक इवन, ऑल राइट. 75.5 इज ब्रेक इवन. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है इफ प्राइस गोज अबव 75.5 then I will have profits, right? I will have profits. Okay, that is expiry view. Okay, so you have to take a little uh, larger view, right? I'm so sorry, expiry view. Okay, so if price goes above 75.5 then you will have profits. Now suppose ये पूरी स्ट्रेटेजी में अगर उल्टी कर दूं, राइट, लेट मी इनवर्स द एंटायर साइड ऑफ इट, राइट. जहां मैंने बाय किया था उसको उल्टा कर देता हूं, सेल कर देता हूं. जहां मैंने सेल किया था वहां पे मैं बाय कर लेता हूं. अगर ये पूरा चीज में उल्टा कर दूं तो क्या होगा, राइट? लेट्स अंडरस्टैंड दिस. सो नंबर वन, मेरा व्यू क्या है? माय व्यू इज बेरिश. नंबर वन, आई एम नॉट बुलिश. नंबर टू, नंबर थ्री इज, इसमें अगर आप इसका इफेक्टिवनेस समझेंगे तो ये बहुत अच्छे से आपको पैसा दे के जाएगी, राइट. बट डू रिमेंबर, इसमें रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं रहता है. डू अंडरस्टैंड, इसमें रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं होता है, बट इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग आपकी बहुत ज्यादा रहती है. चलिए आइए इसको समझते हैं, राइट. द अंडरलाइंग प्राइस यूपी इज एट 75, सेम कंडीशन में लेता हूं, राइट. माय व्यू इज बेरिश, माय व्यू इज बेरिश, right? And what is exact my view? Let me tell you. My view is bearish. That means I don't think that exchange rate can go beyond break even point, right? ये मैं आपको 1-2 मिनट बाद में समझाऊंगा. मेरा व्यू बहुत क्लियर है. 75 का एक्सचेंज रेट चल रहा है और मेरे हिसाब से ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर बाजार नहीं जाएगा. ये मेरा एकदम स्ट्रॉन्ग व्यू है. ओके, तो मैं इसका उल्टा पोजीशन सब जगह क्रिएट कर रहा हूं. ओके, sell a call 75, buy a call 77. Okay, premium 2 rupee, premium 1.5. Okay,
my net premium received, is 0, is the difference, मेरे को जो प्रीमियम मिला है, राइट, दैट इज माय प्रीमियम रिसीव्ड, ऑलराइट. Okay, now please understand max loss, max profit, ये दो चीज आपको मेरे साथ में समझनी है, राइट. सब चीज उल्टी हो जाएगी, राइट. दिस विल बी व्हाट my max loss can be, 77 minus 75 minus, sorry, and 1.5, let me tell you, and my max profit is 0.5, right. My max profit in this strategy is the premium received, right. And what is this max loss? Strike price difference minus net premium received, okay. Let me do it once again, one sec please. 75 minus 77 minus 1.5. अब आप बोलेंगे कि यार इसमें मुझे प्रॉफिट तो सिर्फ 0.5 पैसे का हो रहा है और लॉस जो है वो ₹1.5 भी हो सकता है. सो नंबर वन, इसको कब करना है, कैसे करना है, मैं वापस आपको अभी बताता हूँ. पहली चीज, आपका व्यू बेरिश होना चाहिए. आपका व्यू जो है ये बेरिश होना चाहिए. और आपका व्यू क्या है? करंटली द एक्सचेंज रेट इज एट 75. आपका व्यू क्या है? दैट एक्सचेंज रेट विल गो डाउन, दैट इज 75 से 74, 74.5 कुछ जाएगा. और अगर ऊपर भी जाता है तो इट कांट गो बियॉन्ड 75.5. मतलब आप समझिएगा, प्लीज हैव अ लुक एट मी. 75 इज दिस लेवल. मैं बेरिश हूं, बट मैं नहीं चाहता हूं कि मुझे नहीं लगता है कि 75.5 के ऊपर 75.5 के ऊपर एक्सचेंज रेट जाएगा. और अगर ऐसा है तो ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे से वर्क कर सकती है. एंड लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू दिस विथ एन एग्जांपल. जस्ट अ मोमेंट प्लीज. राइट, सपोज प्राइस यहां पर है, प्राइस इज एट दिस पॉइंट. ओके, 5 थिंग्स कैन हैपन. 1 2 3 4 एंड 5. ओके, ये एग्जाम्पल 2 वाला मैं आपको बता रहा हूं. 75 एक्सचेंज रेट अभी चल रहा है, राइट. एंड माय एनालिसिस सेज that at any given point in time I don't think the price can go beyond 75.5. That means 75 यहां पर है मेरा, right. Okay, and my view is bearish. Okay, और मैं बुल कॉल स्प्रेड का उल्टा क्रिएट कर रहा हूं. बुल कॉल स्प्रेड का उल्टा मतलब बेयर कॉल स्प्रेड. ओके, अब हुआ क्या? अगर प्राइस 74 जाता है, 73 जाता है, तो क्या होगा? डेफिनेटली आई विल हैव प्रॉफिट्स. मेरे को प्रॉफिट्स आएंगे. 75 का प्राइस अगर 75 पे ही कंसोलिडेट करके बंद हो जाता है तो भी प्रॉफिट्स आएंगे, राइट. अगर 75 का प्राइस 75.05 तक जाता है, 50 तक जाता है, ओके, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट. तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई विल स्टिल बी ओके. नो प्रॉफिट नो लॉस रहेगा. मुझे सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन में लॉस हो सकता है कि अगर प्राइस 75.50 के ऊपर चले जाए, मतलब 76 77 चला जाए, तो ही मुझको लॉस होगा. मतलब आउट ऑफ 5 कंडीशन, 1 2 3 4 5, आउट ऑफ 5 कंडीशंस, up to 4 conditions I have a probability to win. See, options is all about probability to win. जो लोग options short करते हैं, right, they work on probabilities to win, right. Why? They have higher, yes, their risk reward is many times not favorable. That's why we call it as unlimited losses with the option writer, right. But still the market fact is option writers, right, are risk takers. So anyone who takes risk, market always equate risk with your returns. So same way, अगर आप ये वाला पार्ट करते हैं, this particular part which I have explained you, right, definitely आपका risk reward favorable नहीं रहेगा, right, but your probability of winning
will be very high. Okay, but इसको करना कब है, इसको करना कब है? So very simple way, right? Number one, आपको कोटक सिक्योरिटीज से व्यू आया है, लेट्स से योर व्यू इज बेरिश व्यू है, और आपको पता है उनने आपको स्टॉप लॉस 75.5 का दिया है, लेट्स से 75 प्राइस चल रहा है, पूरे मंथ का कॉल है, और उन्होंने बताया कि 75.5 राइट के ऊपर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, देन दैट्स द राइट स्ट्रेटेजी टू बी वर्कड अपॉन. आइए इसको थोड़ा सा इफेक्टिव बना लेते हैं, इसको इफेक्टिव बना लेते हैं, राइट? ये 2 और 1.5 है, राइट? सपोज इफ दिस इज 1, you may see this 111, right? Okay, if it is 1.2, देख सकते हैं आप, right? How effective it is. And if it is 0.8, then it is 0.8. Just have a look to it. My profit increases. So if the difference between the premium is higher, if the difference between premium is big, right, unusual, right, then this is the strategy to be executed, right? This strategy is little risky. My disclaimer applies out here. Do it with little cautious, but do remember, right, this is far more effective and with higher probability of winning. Usually my friends who are traders and a lot of other participants, when I meet them, when I talk to them, they usually do this strategy when they are close to the expiry. So this is a preferred strategy. This is basically this one, right? The second one, this is a preferred strategy by a lot of people, particularly being executed during last phase of the contract period. So अगर आप वीकली कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो लास्ट के 3 दिन आप देख सकते हैं, 4 दिन आप देख सकते हैं. अगर आप मंथली ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आखिरी का 1 हफ्ता इसमें बहुत इफेक्टिव हो जाता है, राइट? और ये बहुत अच्छा वर्क भी करता है. सो 2 चीजें, राइट? डिफरेंस इन प्रीमियम हैज टू बी बिग. अगर दोनों का प्रीमियम डिफरेंस ज्यादा है ना तो बहुत इफेक्टिवली काम करेगा, राइट? और आपका जो व्यू है, राइट, वो आपका व्यू बेरिश होना चाहिए, राइट? बेरिश, न्यूट्रल, आप जिसको जैसा भी बोले, राइट? योर प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज 80% ऑफ द टाइम्स, राइट, व्हिच आई हैव एक्सप्लेन्ड यू विद एन एग्जांपल. आप बिल्कुल इसमें पुट ऑप्शंस के साथ भी कर सकते हैं. यू कैन इवन डू इट विद पुट ऑप्शन, राइट? बिल्कुल उल्टा कर लीजिए, राइट? सेकंड जो पार्ट था उसको मैंने अभी आपको समझाया, बेयर कॉल स्प्रेड. सेम वे आप बुल पुट स्प्रेड भी कर सकते हैं, इसका बिल्कुल उल्टा चलता है. Because of time limitation, I'm not touching base it. इसके अलावा you can also do a risk control strategy. Risk control strategy is the name which involves futures and options. Protective put कर सकते हैं, मतलब आपने future option खरीदा है और इसके साथ में आपने put option भी खरीद लिया है, आपने futures options buy किया है और उसके साथ में आपने put option भी buy किया है. और इसका उल्टा भी आप कर सकते हैं, आपने future buy किया है, okay, future buy किया है और आपने ऑप्शन राइट कर दिया है, बेच दिया है. ओटीएम ऑप्शन, एटीएम ऑप्शन, जैसा आपको ठीक लगे वो आपने बेच दिया. यूजुअली लोग फ्यूचर बाय करते हैं और ओटीएम ऑप्शन सेल कर देते हैं, राइट? इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, राइट? ये दोनों स्ट्रेटेजी रिस्क कंट्रोल स्ट्रेटेजी कहलाती है. ऑप्शन सेलिंग एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बट मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि जब तक आप ऑप्शन सेलिंग में प्रोफिशिएंट नहीं हो जाए, गोइंग शॉर्ट विथ ऑप्शंस only needs to be executed once you become really proficient in options market. You understand the impact of volatility, vega and time value, impact of time value on your option position. वो समझिए. कंट्रोल रिस्क एंड रिड्यूस मार्जिन्स बाय हेजिंग. आप हेज मार्जिन्स का बेनिफिट ले सकते हैं, आप अपना रिस्क कंट्रोल कर सकते हैं. मैंने भी आपको अभी एक बुल कॉल स्प्रेड जैसी स्ट्रेटेजी बताई. सेल बोथ कॉल एंड पुट. अगर आप डायरेक्शनली बायस्ड नहीं है, इफ यू आर नॉट डायरेक्शनली बायस्ड, सो आप कॉल पुट दोनों बेच सकते हैं. एंड अंडरस्टैंड पोजीशन एडजस्टमेंट्स एज वेल. याद रखिए ऑप्शंस जो है, it is like चक्रव्यूह. I use this to explain the concept of option. Option is like चक्रव्यूह. आपको तीनों चीज आना चाहिए चक्रव्यूह में. अंदर जाना, अंदर लड़ाई करना और बाहर वापस आना. इसमें से एक भी चीज आपको नहीं आती है, राइट? तो ऑप्शंस आपको सीखने की जरूरत है. Follow stop loss and position sizing and analyze volatility. It should be in decreasing trend if you're buying an options contract. Okay, right? That's it. The end of my part. Manoj ji, I'm so sorry. Vikas ji, can you hear me? Yeah. It was really nice, Hitesh. I mean, I think you explained the options of currency options very well. And I think we are already 1 hour, so I will
straight away move to take some question and answers from our viewers. So, I mean, viewers can put the questions. We will take five, six questions and then we will wrap it up. Please. So there is one question from Sawan Chandak that what is the margin required to sell one lot of currency? So as I said that the margin in currency is very low. So for dollar rupee, the average margin required is between 2.5 to 3%, and it depends upon volatility. So in rupee terms, if I have to put a number, yeah, it will be 2,000 to 2,000 1 rupee. Uh, we are going to see more questions if there are any. Someone has written the slides were slightly hazy. I think, sorry for that if in case it was not very visible. We will try to ensure that next time, the slides are clearer. Uh, See, Tarun Das has asked that where do I get IV and IVP of USD INR? It's a very, I mean, yes, Hitesh, you can take it. All right. So that's a very, very common question about options, because people who are trading equity derivatives, particularly Nifty, they have India VIX, which represents the volatility, the implied volatility of options. So, so far, there is nothing like the volatility index for currencies. But how I used to do up to some time back was there are Bloomberg and Reuters terminal, the info vending terminals. They provide you the entire detail of ATM options, right? ATM options का जो IV चल रहा है उसका एक पूरा चार्ट देते हैं. You can just copy it you copy and paste it in the Excel sheet and you will have a data per se. I used to trade the volatility of options बहुत effective है. मैं just सभी viewers को एक चीज बताता हूँ कि options में जब आप options trade कर रहे हैं, USD INR की particularly मैं बात कर रहा हूँ, 8% of your profit and losses on an option position is usually dependent on volatility, और ये ignore नहीं किया जा सकता है. मतलब अगर एक जगह से, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, आपने ऑप्शन खरीदा है और मान लीजिए आपने उसमें 100 रुपए का प्रॉफिट बनाया है, जस्ट एन एग्जांपल, राइट? मार्केट उसमें से 8 रुपीज विल बी डिपेंडेंट, right? 8 rupees will be your contribution of a change in volatility in the option premium, and sometime due to volatility it is 42-43% as well. Well, we have seen an extreme movement in 2013 2020 as well. 2013 and 2020 were exceptional years, wherein we have even seen an impact of volatility on premium to an extent of 40-43%. Usually it is 8.5% kind of. सो यही एक तरीका है. आप अपने रिसर्च में बात कर सकते हैं. आई एम श्योर आपको बहुत सारे इनपुट एटीएम ऑप्शंस की वॉलेटिलिटी के मिल जाएंगे. यही एक तरीका है. Thanks, Hitesh. So we have one or two more questions I will take. So Girivar Kumar is asking कि GBP INR के options में trading करना चाहिए. See, GBP INR options में liquidity is not that high. So and second is, while trading in GBP INR option, because the liquidity is lower, I would suggest that you can do it, but not with a big size or a quantity, because probably if in case there is a big move, then you may not be able to exit at the same time. So if you want to start with 10-20 lots, you can do that. Ravi Prakash has asked where to check what RBI is doing. I mean, it's a $1 million question. I would say $1 billion question. It is not possible for any of us to know that what RBI is doing. Unlike any other market asset class, if you see, FX is slightly different, where central bank itself intervenes. I can just tell you कि आरबीआई का ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता है कि मेरे को डॉलर रूपी किधर, मतलब दे आर नॉट ट्रेडिंग इन द मार्केट. देयर ऑब्जेक्टिव इज, if there is very high volatility, they come to smoothen the same.
So that because dollar rupee is a macro variable for India, I mean, so their objective is more to smoothen the volatility and nothing else. But very difficult to know where RBI will intervene, where they will buy or sell. So beyond that, I am not in a position to say anything. I think I take one more question. Samar Chauhan, how far we can go long for US dollars? I mean, 6 monthly or yearly options are available and are liquid. Samar, I think this question I have been getting for some time, that we don't have liquidity beyond 3 months. As of now, if you look at weekly and monthly options are liquid up to second months. So like as we are talking right now, we have liquid September contract, we have October as well, and we have weekly options where the near expiries are very very liquid. Yes, 6 months and 12 months are not that liquid. This is the last question I am going to take. Rahul Kukreja, best indicator for currency. See, I mean, currency is a macro variable, so there are many factors which impact it. I mean, there are external factors, there are domestic factors. But in my opinion, if you ask me, the best indicator is the dollar index, and it is the best indicator for the risk as well. So if dollar index goes higher, there is a higher probability that dollar rupee will also tend to move higher. So if you are asking me the most important indicator, I would suggest that it is dollar index. So because we have already exceeded our time of 1 hour, so I will not be able to take more question. Uh, Thanks everyone for giving spending your time on Saturday. I give it to Tanvi. Tanvi. Well, thank you so much, Vikas sir. Thank you so much, Hitesh sir, for being here with us today. It was great to learn from you. And also, Vikas sir, thank you so much for giving your time today. Uh, I would like to have more such sessions with you all. And thank you, the audience, for being patient and being with us today. And I would also like to mention that please follow all our social handles. We are on Insta, Facebook, and Twitter, and also on Telegram and WhatsApp. Thank you so much. Stay safe.